गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन मनरेगा। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेमेन पार्टिसिपेशन जो है मनरेगा में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है पिछले 10 साल के। तो अब जो है टोटल परसेंटेज अगर हम देखें तो वेमेन परसेंटेज आउट ऑफ टोटल परसेंटेज जो है वो 57% तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल 54% के आसपास था। इवन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी इस ट्रेंड को दिखा रहा है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कंट्री में इम्प्रूव हुआ है रिसेंट ईयर्स में। मनरेगा क्या है? इसके अंदर जो है 100 डेज की गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है एक फाइनेंशियल ईयर में हर पुअर हाउस होल्ड को, जो इसके लिए इनरोल करता है। रूरल पुअर हाउस होल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस स्कीम को चला रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो लीगल राइट टू वर्क मिलता है, मतलब लीगल गारंटी मिलती है वेज एम्प्लॉयमेंट की। हर रूरल हाउस होल्ड के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को मनरेगा में रजिस्टर करा सकते हैं। लगभग 1/3 जो है उसमें से वो मिनिमम वेमेन होनी चाहिए इस बेनिफिशरीज की। और अगर फेलियर हो जाता है कि किसी तरह से वर्क नहीं प्रोवाइड करा पाए 100 डेज में, तो जो है उस केस में पेमेंट ऑफ वेजेस बिना काम के भी देनी पड़ती हैं। अब ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ठीक है। और अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको पावर दी गई है कि वो इसके रूल्स जो है बना सकती हैं, अमेंड कर सकती हैं स्टेट की स्कीम के हिसाब से। ग्राम पंचायत जो है वो 50% ऑफ द वर्क जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और जो भी प्लान डिसीजन लिए जाते हैं वो ओपन असेंबली में, ग्राम सभा में लिए जाते हैं और उसको रेटिफाई किया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। अब हर साल एनुअल रिपोर्ट जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल जो है आउटकम ऑफ मनरेगा के आउटकम ऑफ मनरेगा से रिलेटेड जो है रिपोर्ट जो है वो एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को आगे देती है। मनरेगा जो है वो पूरी कंट्री में जो है वो एप्लीकेबल है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लागू होता जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन रहती है। अगर हम परफॉर्मेंस देखें इसके तो 6.19 करोड़ हाउस होल्ड जो है उन्होंने जो है इसके लिए जो अवेल किया है वर्क अंडर दिस स्कीम। तो अब चैलेंजेस और लूप होल्स क्या हैं? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन चल रहा है। पिछली बार देखा गया 935 करोड़ रुपीज़ का जो है फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ इस स्कीम के अंदर। पेमेंट्स के लिए भी डिले हो जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये कंसिडर करती है कि वेजेस जो हैं वो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर के रिलीज़ होने के बाद जो है ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि से जो है पेमेंट हो चुकी है। लेकिन डिलेज हो रहे हैं, जबकि एफटीओ साइन होने के बाद भी, उस प्रोसेस होने के बाद भी जो है डिलेज हो रहे हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें जो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूरल बैंक्स जो हैं वो भी हाईली अंडर स्टाफ्ड हैं, ह्यूजली ओवर क्राउडेड हैं। तो इसलिए ऑफ कोर्स जो है टाइम लग जाता है वेजेस विड्रॉ करने में या वेजेस को लेने में भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेडटेक मित्र पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेडटेक मित्र पोर्टल जो है निकाला है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है। मेडटेक इनोवेटर्स को क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रेगुलेटरी फैसिलिटेशन और न्यू प्रोडक्ट्स लेने के लिए जो है ये फैसिलिटेट करता है, असिस्ट करता है। और ये पोर्टल जो है कोऑर्डिनेटेड जो है कोलैबोरेटिवली निकाला गया है आईसीएमआर, सीडीएससीओ और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी रीसेंट मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी और पीएलआई स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक बूस्ट देगा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इसमें एनकरेज करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके न्यू इनिशिएटिव जो हैं इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल क्वालिटी मेडटेक डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक्स बनाने में हेल्प करेंगे, ईज़ ऑफ इनोवेशन करेगा और एंड टू एंड गाइडेंस करेगा स्टार्टअप्स को कि कैसे जो है वो अपनी पूरी जर्नी प्रोडक्ट तक की उसको स्मूथ किया जा सकता है। और पार्टनरशिप्स भी करेगा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस ताकि जो है इस सेक्टर को एक बूस्ट मिल सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओसिरिस एपिक्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है स्पेस क्राफ्ट जो कि बेनू एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेके आया था ओसिरिस रेक्स, उसको दोबारा एक न्यू मिशन पर भेज दिया गया है नासा ने, और उसका नाम रख दिया गया है ओसिरिस एपेक्स। ओसिरिस एपेक्स जो है वो एक मिशन है
फिजिकल चेंजेस जो है स्टडी करने का एस्टेरॉयड एपोफिस में, जो अर्थ के बिल्कुल पास आ जाएगा अप्रैल 2029 में। तो एपोफिस का जो ऑर्बिट है वो लगभग 20,000 माइल दूर रह जाएगा अर्थ के सरफेस से। तो उसी कंटेक्स्ट में हम देखना चाहते हैं कि क्या फिजिकल चेंजेस आएंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एपोफिस जब पास में फ्लाई करेगा तो उस पर, ठीक है। तो उसके एस्टेरॉयड ऑर्बिट, रोटेशनल स्पीड, सरफेस फीचर्स, इसमें क्या चेंजेस आएंगे जब वो अर्थ के पास से गुजरेगा। तो ओसिरिस एपेक्स जो है स्पेसक्राफ्ट वो डिप भी करेगा उसकी तरफ, मतलब उसकी तरफ उतरेगा भी, और एपोफिस की तरफ भी, ठीक है। तो एपोफिस क्या है, एक स्टोनी एस टाइप एस्टेरॉयड है जो सिलिकेट का बना है और मिक्सचर ऑफ मेटालिक निकल और आयरन का बना है। एक रेमनेंट है एक रेमनेंट है जो है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, और इसको हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड जो है वो कंसिडर करते हैं। और ये आपके जो जुपिटर के जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन कर्मयोगी। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गुड गवर्नेंस डे पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल जो है उन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन निकाला है मिशन कर्मयोगी का। मिशन कर्मयोगी बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना के लिए एक प्रोग्राम है, और इसके जो है सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं उन सबको हेल्प करने के लिए इस यूनिक प्रोग्राम को निकाला गया, और ऑन साइट लर्निंग पर इसका ज़्यादा फोकस है। तो ये हर सिविल सर्वेंट को जो है वो कवर करता है ये प्रोग्राम। अगर हम इसके 3 न्यू फीचर्स देखें तो माई आई गॉट ये एक टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्स है इंडिविजुअल ऑफिसर्स के लिए। ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है वो इक्विटेबल एक्सेस देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। और क्यूरेटेड प्रोग्राम्स जो हैं, ये क्यूरेटेड प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिक नीड्स हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स की उसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीर बाल दिवस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली वीर बाल दिवस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है भारतीय मंडपम में, न्यू दिल्ली में। तो वीर बाल दिवस जो है वो कमेमोरेट करता है मार्टरडम ऑफ बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि 10th गुरु गोविंद सिंह जी के जो है सन थे। और इन दोनों को जो है एक्चुअली गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, जिनको 4 साहिबजादे कहते हैं हम। और जो 2 थे वो मुगल से लड़ते हुए मर गए थे और शहीद हुए थे रादर। और जो 2 बाकी हैं उनको जो है औरंगज़ेब ने अपने गवर्नर ऑफ सिविल हिंद को ऑर्डर देकर जो है ब्रिक में मतलब दीवार में ज़िंदा ही जो है वो चनवा दिया था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब ये शहादत जो है जिसको जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो 10th सिख गुरु थे, और ये 6th सिख गुरु बने एज ऑफ 9 में। और इन्होंने जो है मुगल्स के खिलाफ जो है वो बैटल ऑफ मकसद जो है 1705 में लड़ी थी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चंद्रा रिवर। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रिसेंटली एक एसयूवी ओनर को जो है चालान किया है, क्योंकि उसने ऑफ कोर्स चंद्रा रिवर जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में अपनी व्हीकल को ड्राइव किया। तो ये चंद्रा रिवर वन ऑफ द 2 रिवर्स है जो कि मर्ज होती है चेनाब रिवर बनने में और लाहौल रीजन में हमारे हिमाचल प्रदेश के। तो ओरिजिन अगर हम देखें तो ये इसका जो है स्नो लाइंग जो एरियाज़ हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है हिमालयन रेंज के बेस में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और ये कंसिडरेबल डिस्टेंस तक फ्लो करती है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, जब ये एकदम से साउथ वेस्टर्ली कोर्स लेती है स्पीति वैली में, और ये मर्ज होती है भागा रिवर के साथ डाउन स्ट्रीम ऑफ केलोंग में। ब्यूटीफुल जो है चंद्रताल लेक भी जो है वो यहीं पर बनाई गई है, एट इट्स सोर्स बनी गई है। और अगर हम देखें तो ये रिवर जो है कई ग्लेशियर्स से फेड होती है। शिगरी ग्लेशियर जो इसके लेफ्ट बैंक में पड़ता है, समुद्री ग्लेशियर जो इसके राइट बैंक में पड़ता है। कोकसर जो है वो एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट है अलॉन्ग दिस रिवर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्यांगटैंग रिवर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेथ टेकिंग पैटर्न्स ऑफ जाइंट ट्रीज देखे गए हैं क्यांगटैंग रिवर ईस्ट चाइना रीजन में, जेजियांग प्रोविंस के। तो ये क्यांगटैंग रिवर जो है ये साउथ ईस्ट चाइनीज़ रिवर है
जो कि हुई और जियांगसी प्रोविंसेस के जो है बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट चाइना सी में जाकर मिलती है। जो सदर्न टर्मिनल है इसका एंशंट ग्रैंड कनाल का, वहाँ पर ये रिवर रिवर लोकेटेड है। ये जो आपका एंशंट ग्रैंड कनाल है, ये 5 मेजर रिवर जो है चाइना की, नॉर्थ से साउथ तक की उनको जो है मिलाता है। और ये एनसर्कल जो ये कैंटेंग रिवर है, इस पे मेजर सिटीज़ जैसे शंघाई या निगबो ये सब लोकेटेड हैं ऑफ कोर्स। और ये स्पेक्टेकुलर जो कैंटेंग रिवर का टाइडल बोर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइडल बोर इन द वर्ल्ड है। ओके, टाइडल बोर क्या होता है? ये बेसिकली कोस्ट के पास एक फिनोमिना होता है, जब रिवर जो है ओशन या सी में एम्प्टी हो रही होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग टाइड जो आती है और रिवर को पुश पुश करती है अगेंस्ट द करंट, उसको हम जो है टाइडल बोर कहते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द टाइडल बोर जो है वो ग्रेटर होती है जब बैंक्स के पास रादर देन एट मिड स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AS-24 किल जॉय। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रशिया ने रिसेंटली AS-24 किल जॉय जो है हाइपरसोनिक मिसाइल एम्प्लॉय किया है अगेंस्ट यूक्रेन। ओके, तो AS-24 किल जॉय, इसको किंजल मिसाइल भी कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन वेपन है ये। स्पीड इसकी लगभग मैक 10 तक पहुंच जाती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों लगे हुए हैं इसमें ऑफ कोर्स। और इसकी रिपोर्टेड रेंज जो है 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। इसको MiG-31 फाइटर जेट से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल जो है मैनूवर भी कर सकता है ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स फ्लाइट। ओके, तो हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं? हाइपरसोनिक वेपन्स बेसिकली जो एटलीस्ट मैक 5 तक की स्पीड पर जो है फ्लाई करते हैं, उनको हम हाइपरसोनिक वेपन्स कहते हैं। हाईली मैनूवरेबल भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। और दो तरह की कैटेगरीज के आते हैं बेसिकली, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ग्लाइड व्हीकल्स जो है वो एक रॉकेट द्वारा लॉन्च होते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो खुद ही एक इंजन द्वारा पावर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो UNHCR जो है उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ को ग्रेटिट्यूड शो किया है कि अंडमान निकोबार में जो है वो 142 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की इंडिया जो है केयर कर रहा है। तो जो है UNHCR जो है UN की रिफ्यूजी एजेंसी है, जो कि लाइव्स को सेव करने के लिए डेडिकेटेड है। और ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है। UNHCR जो है 1950 में बनाया गया था रिफ्यूजी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन जो एक लीगल फ्रेमवर्क देता है इस एजेंसी के वर्क को। और रोहिंग्याज की अगर हम देखें बात करें, तो बिगेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ इन द इंटायर साउथ एशिया रोहिंग्याज ही हैं, और इंडिया उसको होस्ट करता है। लगभग 1,68,000 रोहिंग्यास जो म्यांमार से 2012 से अभी तक भागे हैं, उसमें सिर्फ 40,000 जो हैं वो इंडिया में ही इलीगल उन्होंने एंट्री ली है। एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है और सिटीज़न हो सकता है या फॉरेनर हो सकता है एज पर फॉरेनर्स एक्ट। इंडिया ने क्योंकि 1951 का UN कन्वेंशन फॉर या फिर उसका 1967 का प्रोटोकॉल जो है रिफ्यूजीज से रिलेटेड साइन नहीं किया है, तो इंडिया बाध्य नहीं है UNHCR के जो है वो मैंडेट से। तो इश्यूज जो अगर हम देखें रोहिंग्यास के क्या है इंडिया में, तो इंडिया में बहुत से जो है रोहिंग्यास ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्वायर कर लिए हैं इंडियन सिटीजन्स के, जैसे कि आधार, पैन कार्ड या वोटर कार्ड। और इससे कंसर्न हमें ये दिख रहा है कि क्या ये धीरे धीरे इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं ये नेचुरलाइजेशन करके सिटीज़न तो नहीं बन जाएंगे इंडिया के। तो इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखा गया है कि इस जो है वल्नरेबिलिटी ऑफ रोहिंग्यास को एक्सप्लॉइट कर रही है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के लिए। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई रिफ्यूजी क्वेश्चन को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से नहीं डील किया, बट केस बाय केस बेसिस पर जो है वो अपने एक्शन लेते रहे हैं अभी तक। तो ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is participation of women in Manrega. This topic is important for your social issues. So women participation in Manrega has reached the highest level in 10 financial years. So the women percent days out of the total in percentage has stood at about 57% in 2023 and 2020, 2022 and 2023 time period. Even the periodic labor force survey has shown that female labor force participation rate has increased in the country in recent years. Okay, so what is Manrega? So Manrega aims to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult member
volunteer to do unskilled manual work. Manrega is basically a centrally sponsored scheme, and the Ministry of Rural Development is the concerned ministry which is implementing this scheme. So, if we look at the features of the scheme, Manreka provides a legal guarantee for wage employment. Every rural household has the right to register under Manrega, and at least one third of the beneficiaries of the scheme have to be women. So there are also legal provisions for allowances and compensation, both in cases of failure or to provide work on demand or delay in payments for work undertaken. So basically, it's a demand-driven program, and state governments are authorized to make rules and amend the concerned state scheme according to their needs. So gram panchayats have to implement at least 50% of the works in terms of their cost, and plans and decisions by taken for in this case of Manrega have to be made in open assemblies of the Gram Sabha and to be ratified by the Gram Panchayat only. So an annual report is also prepared by the Central Employment Guarantee Council on the outcomes of Manrega, to be presented annually by the central government to the parliament, of course. Okay, so Manrega basically covers the entire country with the exception of districts which have a 100% urban population. As of 2020 to 2023, 6.19 crore households have availed the work under this scheme. But there are certain challenges also. So we have seen financial misappropriation of 935 crore rupees last year under Manrega. There has also been delay in payments. For example, Ministry of Rural Development considers wages have been paid once the fund transfer order is signed by the second signatory. So, but of course, we have seen that delays take place in the processing of signed FTOs also, which leads to delay in payments. There is also this banking issue where rural banks are highly understaffed and they remain hugely overcrowded. So that's why there are issues in payment uh, delays. Okay, so the next topic is MedTech Mitra portal. This topic is important for your economy section. Recently, Union Minister of Health and Family Welfare has launched this MedTech Mitra portal, which is an online portal that aims to assist MedTech innovators in clinical evaluation, regulatory facilitation, and uptake of new products. This portal will be coordinated collaboratively by ICMR, CDSCO, and Atal Innovation Mission. So MedTech Mitra platform, along with recent medical devices policy and PLI scheme, will together provide a boost to medical devices sector and encourage domestic manufacturing of these devices. So the new initiatives would also facilitate indigenous development of affordable quality medtech devices and diagnostics. It will also ensure ease of innovation. It would also provide end-to-end guidance to startups, and it would also foster partnership between engineers, scientists, and clinicians, which was actually lacking in this sector. So the next topic is Osiris Apex. This topic is important for your science and tech section. So in an unprecedented extension of its duties, spacecraft which delivered asteroid samples from Bennu has now embarked on a new mission, and NASA has renamed Osiris Rex to Osiris Apex. So what is now Osiris Apex? It is a mission to study the physical changes to asteroid Apophis, which will result from its rare close encounter with Earth in April 2029. Apophis orbit will bring it within 20,000 miles distance from Earth's surface. So this mission would of course observe physical changes induced by Earth's gravitational pull during Apophis flyby, and these changes could also include alterations in the asteroid's orbit, uh, rotation speed, and surface features like quakes or landslides. Additionally, Osiris Apex spacecraft will also dip towards the surface of Apophis. Apophis is basically uh, an asteroid which was discovered in 2004. It's a stony S-type asteroid made of silicate and a mixture of metallic nickel and iron. So it's a remnant from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago. So Apophis is classified as a near-Earth asteroid also. Okay. So the next topic is Mission Karma Yogi. This topic is important for your governance section. Recently, on the occasion of Good Governance Day, Union Minister of Personnel has launched the extended version of Mission Karma Yogi, which is basically a mission to prepare civil servants for the future. This unique program will help
lay the foundation for civil servants in the country. There will be more focus on on-site learning, and this program of course covers all the civil servants. And there are new features in this igot Karmayogi platform. For example, my igot, which is basically a targeted training course on homepage of individual officers, which directly address the unique capacity building needs of the officer as identified by their department. So there are also blended programs which facilitate equitable access to training methodologies across all levels. So there is also curated programs which are designed specifically by the ministries or departments or training institutions for the specific needs, which are specific learning needs of the department. So the next topic is Veer Bal Divas. This topic is important for your art and culture section. So PM Modi has recently participated in Veer Bal Divas function at Bharat Mandapam in New Delhi. So if we look at Veer Bal Divas, it is commemorated to honor the martyrdom of Baba Fateh Singh and Zorawar Singh Ji, the Sahibzade of 10th Guru Gobind Singh Ji, on 26th December every year. So Guru Gobind Singh Ji, the leader of Sikhs during the Mughal reign, had four sons, and they were referred to as the Char Sahibzade of Khalsa. So two of the sons of Guru Gobind Singh Ji were killed fighting the Mughals, and the two other sons were bricked alive on the orders of Aurangzeb's governors of Sirhind. So, if we look at Guru Gobind Singh Ji, he was the 10th Sikh Guru, and he became the Sikh Guru at the age of 9, and he fought against the Mughals in the Battle of Muktsar in 1705. So the next topic is Chandra River. This topic is important for your environment section. Himachal Pradesh police has cracked down on an SUV owner for allegedly driving vehicle across Chandra River in Lahaul and Spiti district. So Chandra River is one of the two rivers which merge to form Chenab River in Lahaul region of Himachal Pradesh. So it rises in the snow-lying area of main Himalayan range of Lahaul and Spiti districts. So it flows for a considerable distance along the base of this range in a southeasterly direction before turning completely and taking a southwesterly course in the Spiti Valley. It flows on to merge with the Bhaga River downstream of Kelong, and the beautiful Chandra Tal Lake is formed at its source. So, throughout its course, this river is fed by a number of glaciers, the biggest ones being Shigri on the left bank and Samudri on the right bank. Koksar is the only important human settlement along this river. So the next topic is Kyangtang River. This topic is important for your international relations. So breathtaking patterns of giant trees have appeared on the frozen Kyangtang River in East China's Zhejiang province amid a continuing cold wave. So Kyangtang River, it's a southeast Chinese river which originates on the borders of Anhui and Jiangxi provinces, and it flows into the East China Sea. So this river is also the southern terminal of the ancient Grand Canal, which links five major rivers in China from north to south. This river is encircled by economically booming cities like Shanghai and Ningbo. And the spectacular Kyangtang River tidal bore is also known to be the one of the largest tidal bores in the world. So, what is a tidal bore? It basically occurs along a coast where a river empties into an ocean or sea. So a tidal bore is a strong tide which pushes up the water against the current, and it happens due to sudden change. It causes sudden change in the depth, and the height of the bore is greater near the banks of a river than at midstream. So the next topic is AS-24 Killjoy. This topic is important for your security section. So Russia has recently employed its AS-24 Killjoy hypersonic missile, which is also known as the Kinzhal missile, against Ukraine. So it is one of the six next generation weapons which President Putin had mentioned during his speech in March 2018. So this Kinzhal missile can reach speeds of up to Mach 10, and it can carry both, of course, conventional and nuclear warheads. It has a reported range of 1500 to 2000 kilometers, and it has been designed to be launched from MiG 31 fighter jets. So this missile maneuvers during all stages of its flight. So it's a hypersonic weapon. So what are hypersonic weapons? They can fly at speeds of at least Mach 5, and they are highly maneuverable. They are different from ballistic missiles, and uh, they also have
because because the ballistic missiles, they have limited maneuverability, but hypersonic weapons, they are very maneuverable despite the high speed. Okay, so there are two types of hypersonic weapons: the hypersonic glide vehicles and the hypersonic cruise missiles. So hypersonic glide vehicles are launched from a rocket, but hypersonic cruise missiles, they are themselves powered by air breathing high speed engines. Okay, so the next topic is Rohingya refugees. This topic is important for your social issues. So UNHCR has recently expressed gratitude to Indian authorities at Andaman and Nicobar Islands for taking care of 142 Rohingya refugees. So UNHCR, it's the UN Refugee Agency, which is a global organization dedicated to saving lives and protecting rights of people who are forced to flee their homes because of conflict and persecution. It is headquartered in Geneva, and UNHCR was created in 1950 to address the refugee crisis, which resulted from World War II. So, 1951 Refugee Convention, was established to make the mandate of this UNHCR and legal framework has of this UNHCR guides this body as of now. So, if we look at the status of Rohingya refugees in India, so India hosts the biggest number of refugees in the entire South Asia region. So, according to government's estimate only, about 40,000 of the total 168,000 Rohingyas who have fled Myanmar since 2012 have entered India illegally. In legal terms, a person living in India can be either a citizen or a foreigner, defined under the defined under the Foreigners Act of 1946. Because India is not a signatory to the 1951 UN Convention or the 1967 Protocol to the same, we are not binded by the UNHCR statute. So there are also issues with Rohingyas in India. We have seen that many Rohingyas have acquired documents which are meant for Indian citizens. So there is also this raises a concern that they may acquire citizenship by naturalization, these illegal migrants, of course, and also terrorist organizations who are looking to exploit the vulnerability of Rohingyas could basically jeopardize India's national security. Successive governments have not made any comprehensive or refugee policy. Rather, they have preferred to deal with this refugee questions on a case by case basis. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.